Now we take collision. Most time पे point. Every year maximum इस टॉपिक में से एमसीक्यू आते हैं, तो हमें ठीक से ढंग से इसको पढ़ना है. फर्स्ट collision. तो collision is an isolated event in which a strong force acts between two or more bodies for a short time, as a result of which the energy and momentum of the interacting particle change. So in collision, particle may or may not come in a real touch. Instead, in collision between two billiard balls or a ball and bat, there is physically contact. While in a collision, of alpha particle by a nucleus is that Rutherford scattering experiment, there is no physical contact between target particle and bombarding particle. Okay. Now, stage of collision. First, there are three distinct identifiable stages in a collision, namely before, during, and after. Before collision, during collision, and after collision. 3 points are important: before collision, during collision, and after collision. In the before and after stage, the interaction force are zero. Before collision and after collision, and no interaction force. Between these two stages, the interaction force are very large and often dominating force governing the motion of body. Means interacting force before collision and after collision के बीच में very large at a short time. Okay, the magnitude of the interacting force is often unknown. Therefore, Newton's second law cannot be used. Okay, because interacting force very short time के लिए लगता है, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ डजंट यूज. The law of conservation of momentum is useful in relating the initial and final velocity. Okay, तो अब derive the relation between initial and final velocity, means before collision and after collision के बीच में velocity की relation derive करेंगे. Momentum, second, momentum and energy conservation in collision. First, momentum conservation. In a collision, the effect of external force such as gravity or friction are not taken into account as due to a small duration of collision. Average impulsive force responsible for collision is much larger than the external force. Means gravitational और फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल इम्पल्सिव फोर्स लगता है, तो हम उसको निग्लेक्ट करेंगे. तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड सिंस दिस इम्पल्सिव फोर्स इज इंटरनल, therefore the total momentum of the system always remains constant. जो ग्रेविटी है और फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड इंटरैक्शनल फोर्स से बहुत कम है, इसलिए मोमेंटम कमजोर रहता है. हम ग्रेविटी और फ्रिक्शनल फोर्स की इफेक्ट नहीं लेंगे यहाँ पर. सेकंड, एनर्जी कंजर्वेशन. इन अ कोलिजन
total energy also always conserved. Here, total energy include all form of energy, such as mechanical energy, internal energy, excitation energy, radiation energy, or even mass energy. These two laws are fundamental laws of physics and applicable for any type of collision, but this is not true for the conservation of kinetic energy. Okay, so here we take two type collision: elastic collision, inelastic collision, and partial elastic collision. Okay, so types of collision. On the basis of conservation of kinetic energy, here take three type collision. First, perfectly elastic collision. Second, perfectly inelastic collision. And third, inelastic collision. And third, perfectly inelastic collision. A inelastic collision, a perfectly elastic और perfectly inelastic के बीच का है. Now we take first perfectly elastic collision. In this collision, kinetic energy is always conserved. If in a collision, kinetic energy after collision is equal to kinetic energy before collision, the collision is said to be perfectly elastic. Means kinetic energy is conserved. Kinetic energy is conserved. Inelastic, if in a collision, kinetic energy after collision is not equal to the kinetic energy before collision. That means the collision is said to be inelastic. Means kinetic energy is not conserved. Okay? And perfectly inelastic collision. After collision, two bodies move with a stick to each other. If in a collision, two bodies stick together or move with same velocity after the collision. Means here we take one body and M1 and second body M2. After collision, both move with same velocity M1 and M2. This type is collision, perfectly inelastic collision. Okay, तो इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम. इनइलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नॉट सेम. एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन both kinetic energy not same, but after collision both bodies stick together or move with the same velocity. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो बाद में हम लेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो हियर E इक्वल टू 1 बाद में आने वाला है, हम डिटेल में स्टडी करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन in elastic collision 0 less than E less than 1, and coefficient of restitution perfectly inelastic E equal to V take a 0. Okay. Now, next. Here we write in a form of kinetic energy before and after collision kinetic energy same. Here kinetic energy appear in the other form. Final kinetic energy is less than initial kinetic energy, such as when initial kinetic energy is converted into internal energy of the product as heat, elastic, or excitation. While in the other case, final kinetic energy greater than initial kinetic, such as internal energy stored in the collide particle is released. Example, bomb is blast. Okay, where internal energy converted in a kinetic plus heat energy.
And here the term perfectly inelastic does not necessarily means that all the kinetic and initial kinetic energy is lost. It's implied that the loss in kinetic energy is as large as it can be. Okay. But here, all three cases, momentum conservation, momentum conservation means before collision momentum is equal to after collision momentum. Okay, all three cases. Here given example, collision between atomic particle bouncing off ball with the same velocity after the collision with Earth. Perfectly elastic collision का example. Inelastic collision, collision between two billiard balls, collision between two automobile on a road. In fact, all majority of collision belong to this category. And last, perfectly inelastic collision. Collision between a bullet and a block of wooden into which it is fired when the bullet remains embedded in the block. This is the VTEC bullet. This is the block. After collision, bullet is embedded, doesn't leave this block. So this is the perfectly inelastic collision. On the basis of the direction of colliding body, direction के regarding collision. So first we had on or one-dimensional collision. Second, oblique collision. In a collision, if the motion of collide particles before and after the collision is along the same line, the collision is said to be head-on or one-dimensional collision. Means before collision दोनों की एक ही direction में velocity है. After collision भी वन ही line में, only one line में उसकी velocity है. तो this type of collision is one dimensional collision या head on collision. Okay. इम्पैक्ट पैरामीटर न्यूक्लियस में आता है, चैप्टर नंबर 13 में हम लेंगे. अब ऑब्लिक कोलिजन. If two particle collision is glancing, is that such that direction of motion after collision are not along the initial line of motion. The collision is called oblique collision, या two-dimensional collision, या three-dimensional. If in oblique collision, the particle before and after collision are in the same plane, the collision is called two-dimensional, otherwise three-dimensional. Here, this body collide with other body, not head-on, some point other to the center of line. The other point पर collide होती है. So after collision, this move in this direction, the other body move in this direction. This angle is theta and this angle is phi. So after collision, both move not same line before collision. Okay. So collision of two glider on an air track, example है head-on collision का, और oblique collision का example collision of billiard ball. अब टॉपिक लेते हैं, हमारे सिलेबस में भी है एनसीईआरटी में. तो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन मींस वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. वी टेक वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. Okay. Also here we call one dimensional
इलास्टिक कोलिजन, ओके। हेड ऑन कोलिजन को हम वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। नाउ टेक टू बॉडी m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2, u1 and u2 in the same direction. They collide such that after collision, their final velocity after collision m1 की velocity v take v1, m2 की velocity v take v2. According to first elastic collision, the first we take momentum conservation. Initial momentum is equal to final momentum. तो इनिशियल मोमेंटम वन डायमेंशनल है, इसलिए वी डोंट टेक वेक्टर को m1u1 plus m2v2 आफ्टर कोलिजन m1v1 plus m2v2. v वाले टर्म वन साइड ले जाते तो m1v1 टेक इन अ लेफ्ट साइड एंड m2v2 टेक इन अ राइट साइड. Means m1 common u1 minus u1, m2 common v2 minus u2, equation number 2. According to law of conservation of kinetic energy, so before kinetic energy is equal to after kinetic energy, before kinetic energy equal to after kinetic energy. So 1 upon 2 m1 u1 square plus 1 upon 2 m2 u2 square is equal to 1 upon 2 m1 v1 square plus 1 upon 2 m2 v2 square. Now, this term take in a right side and this term left side, this term take in a right side. So 1 upon 2 m1, 1 upon 2 cancel both sides, m1 common u1 square minus v1 square, m2 common v2 square minus u2 square. Equation number 4. Now, take ratio equation 4 and 2. तो m1 m1 कैंसिल, तो यहाँ पर u1 square minus v1 square, u1 square minus v1 square by u1 minus v1 is equal to v2 square minus u2 square divided by v2 minus u2. ये दोनों का रेशियो लेते हैं. m1 m1 cancel, m2 m2 cancel. u1 square minus v1 square means a square minus b square की फॉर्मूला u1 minus v1 into u1 plus v1. u1 minus v1 cancel, v2 minus u2 cancel. Here we write only plus term. So we write u1 minus v1, u1 plus v1 divided by u1 minus v1 is equal to v2 minus u2 and v2 plus u2 divided by v2 minus u2. Here, this term is cancelled. So here we write u1 plus v1 is v1 plus u1 plus v2 plus u2, equation number 5. Now, initial velocity taken one side and after collision velocity taken other side. So here u1, so u2 take in a left side, so u1 minus u2, and v1 take in a right side, so v2 minus v1, equation number 4. Okay. Now, हमें find करना है after collision its velocity. तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अप्रोच में नजदीक जाना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. आफ्टर कोलिजन दूर जाते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो दिस इज द कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और दिस इज द कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ओके. तो रेशियो ऑफ relative velocity of separation to a relative velocity of approach is called restitution coefficient. The ratio of relative velocity of separation and the relative velocity of approach is defined as the coefficient of restitution. So here we define other quantity. Okay. तो हमें याद रखना है equal to
V2 minus V1 means relative velocity of separation, and U1 minus U2 means relative velocity of approach. Now, this term take in a left side, okay, means V2 minus V1 is equal to E into U1 minus U2. Now we take for a perfectly elastic collision, E equal to 1. So V2 minus V1 is equal to U1 minus U2. This is for a perfectly inelastic collision, E is equal to 0. Then V2 minus 1 equal to 0, V2 equal to V1 means stick to each other. Both body travel after collision same speed. It means the two bodies stick together and move with the same velocity. For inelastic collision, 0 less than E less than 1 means V2 minus 1 equal to E, U1 minus U2. In short, we can say that is the degree of elasticity of collision, and it is the dimensionless quantity. It is the dimensionless quantity. Now, we derive after collision velocity of both body. Now, here we write VT को सब्जेक्ट बनाए तो V1 इस तरफ जाएगा, तो V1 प्लस U1 माइनस U, तो V2 इक्वल टू V1 plus U1 minus U2. This value put in equation 1. This is the equation 1. This is the equation 1. यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट करनी है, तो M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 U1 plus M2 ब्रैकेट में. तो यह हम we write M1 U1 plus M2 U2 plus M1 V1 plus M2. V2 is equal to V1 plus U1 minus U2. U1 U2 वाले टर्म एक साइड लेते हैं, तो यहाँ पर M1 U1 M2 U1, तो नाउ राइट M1 minus M2. टेक इन राइट साइड प्लस है तो माइनस होगा, M1 minus M2 into U1 प्लस माइनस है राइट साइड लेफ्ट साइड लगे तो प्लस होगा, तो M2 but M2 तो 2M2 U2 is equal to here M1 V1 plus M2 V2, so M1 plus M2 into V1. Now V1 is equal to divide M1 plus M2, so M1 minus M2 by M1 plus M2 into U1, 2M2 U2 upon M1 plus M2. After collision, first body की velocity आई V1 equal to M1 minus M2 upon M1 plus M2 U1 plus 2M2 U2 upon M1 plus M2. तो ऐसे V1 को सब्जेक्ट बना के इक्वेशन 1 में V1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें ये आंसर मिलता है. मीन्स इस इक्वेशन में 1 की जगह पर 2 की जगह पर हम 1 लेते हैं, तो V2 is equal to M2 minus M1 plus M2 U2 plus 2M1 U1 upon M1 plus U2. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है, और इसके एग्जाम्पल एमसीक्यू नीट में कई बार आए हैं, और ओल्ड पेपर भी आप देख सकते हैं. तो इस फॉर्मूला के बेस पे कई बार एमसीक्यू नीट में AEEE और एम्स में लास्ट पास्ट ईयर के पेपर में आप इसके एमसीक्यू देख सकते हैं. तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखनी है. आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडी, तो हियर V1 is equal to M1 minus M2 upon M1 plus M2 into U1 plus 2M2 U2 upon M1 plus M2.
and V2 is equal to M2 minus M1 upon M1 plus M2 into U2 plus 2 M1 U1 upon M1 plus M2. तो ये हमें याद रखनी है फॉर्मूला। ओके, कई बार इसके एग्जांपल एमसीक्यू नीट और जी दोनों में आ गए हैं। अब हमें स्पेशल केस लेना है, बोर्ड में भी है ये। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ स्पेशल केस ऑफ हेड एंड इलास्टिक पॉलीजन, if projectile and target are of same mass, is that m1 equal to m2. So put here m1 equal to m2 means 0, m1 equal to m2. So here m1 plus m1, 2m1 cancel. So v1 is equal to u2. v1 equal to u2. Here m1 equal to m2, this term is 0. m1 plus m1, 2m1, 2m1 cancel, u1. Means v2 is equal to u1. Okay, so it means when two body of equal mass undergoes head-on elastic collision, their velocity get interchange. फर्स्ट की एनर्जी सेकंड को मिलेगी, सेकंड की एनर्जी फर्स्ट को मिलेगी, वेलोसिटी। ओके, तो v1 इज इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। ओके, तो ये हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्पेशल केस, if massive projectile collide with light target, means m1 very greater than m2। ओके, तो मीन्स प्लस और माइनस में जो m2 है वो हमें 0 लेना है। तो वी टेक m2 हियर 0, m2 0, m1 कैंसिल, तो हियर u1। Here we take m2 0, but m2 by m1 is negligible. So m2 by m1 negligible. So means this term is 0 also. So v1 equal to u1. Here we take m2 0, m2 0. So minus m1, m1. So minus u2. m2 0, m1 cancel, 2 u1. So minus u2 plus 2 u1. Minus u2 plus 2 u1 v2. Means collision of truck with cycle, means ट्रक साइकिल से कोलाइड होगा तो इसकी वेलोसिटी डज नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी इनिशियली होगी वो ही रहेगी, बट साइकिल की वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, ये हमें याद रखना है। लास्ट इसमें लेते हैं, इफ लाइट प्रोजेक्टेड कोलाइड विथ वेरी हेवी टारगेट, मीन्स mv वेरी लेस देन m2, मीन्स m1 को हम निग्लेक्ट करेंगे। ऊपर के केस में हम m2 के निग्लेक्ट किया था। तो हियर वी टेक m1 0, m2 कैंसिल, माइनस u, m1 0, m2 कैंसिल, प्लस 2 u2, माइनस u1 प्लस 2 u2। तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1 प्लस u2। Here we take m1 0, m2 cancel, u2, m1 0 निकले, means v2 equal to u2। ओके, तो एग्जाम्पल, कोई बॉल के साथ कोलाइड होगा तो बॉल की वेलोसिटी डजंट चेंज, बट बॉल की वेलोसिटी चेंज होती है। ओके, मीन्स साइकिल वो ट्रक से कोलाइड होगी तब साइकिल की वेलोसिटी चेंज होगी, बट ट्रक की वेलोसिटी डजंट चेंज। ओके, तो यहाँ तक आज रखते हैं। ये सब फॉर्मूला लर्न करनी है, याद रखनी है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, लास्ट ईयर के सब पेपर, पास्ट सब पेपर देख लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल एक निकलेगा ही। ओके, तो मोस्ट आईएमपी ये टॉपिक है, तो ये हमें याद रखना है। टुमारो वी मीट एट 6:45 इन मॉर्निंग। ओके, चलो कल मिलते हैं।